हिंदी फिल्म्स देखते हो? हाँ। इस साल कौन सी हिंदी फिल्म्स देखी? अरे यार ऐसा मत पूछो ऐसे we have zero Yeah. memory of what is going इस on in साल life. क्या क्या रिलीज हुआ? कांतारा 2 रिलीज हुई, वो धुरंधर रिलीज हुई। धुरंधर नहीं देखी नहीं अभी तक, देखी। I've not कांतारा seen भी it नहीं yet. देखी। जाएंगे। हाँ देखनी है। हाँ ये Um, दोनों नहीं देखी। चलो एनिमल देखी है which we Animal was spoke last year. about. Animal was last year. I don't know. Yeah, Passage you- of you liked time Animal is- आपको जैसी लगी सेम मुझे लगी। आप बता Good दो। answer. how did you feel about Animal? The socio-political narrative. नहीं ठीक लगी? नहीं नहीं कुछ नहीं। संदीप सर के साथ एक पॉडकास्ट गाने अच्छे थे, गाने अच्छे थे। गाने बहुत अच्छे थे। गाने अच्छे I love the songs. कौन से सीन अच्छे थे? नहीं अरे फाइट सीन की बात हाँ, fight scene है, एक्शन fight की scene बात है। कर रही हूँ फाइट सीन फाइट क्या तू क्यों बन गई पॉडकास्टर? अरे यार तो आंसर करो। तुझे स्पॉट पे डालना बहुत मेरे लिए नेचुरल है Yeah. लाइक रोस्ट यू. Sometimes I feel कि ये जो अक्षय खन्ना का ये वाला क्लिप है ना, ये सॉन्ग वाला, आई फील कि उसने धुरंधर के लिए ज्यादा पब्लिसिटी करी एज कम्पेयर टू द एक्चुअल पब्लिसिटी कैंपेन, या दैट्स ट्रू। Yeah. हमने तो वही देखा है सिर्फ, राइट? पूरे रील्स पे पूरा वही भरा हुआ है। उसकी Even वजह the से song. लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, Yeah. like what is this Akshay That is Khanna? modern marketing. which again comes out of Yeah. Aditya Dhar and Akshay Khanna focusing on their own craft, and then randomly कुछ ऐसे viral चला जाता है. हाँ Yeah. अपेरेंटली वो अनस्क्रिप्टेड मोमेंट है. आई थिंक वो डांस भी कोरियोग्राफ नहीं Yeah. था. ही जस्ट डिड व्हाटएवर एंड वो वायरल हुआ. Yeah, there's an old video of Vinod Khanna, his father doing the same step, exact same step. अच्छा ओह और कितने हिट फिल्म्स निकले बॉलीवुड से? पता नहीं मेमोरेबल सैयारा. ऐसे. या हाँ सैयारा देखे हमने। आधी देख के छोड़ दी थी. देख ही आई लेते पूरी। कैसी लगी सैयारा? एक्चुअली अच्छी थी. वी जस्ट लाइक Entertaining थी, हाँ. मतलब It was time pass, entertaining. हाँ, अच्छा था। ग्रिपिंग तो थी. What was entertaining in it? Just कुछ चल रहा था द स्टोरी, बट द हाँ. स्टोरी तो प्रेडिक्टेबल थी. Story आई was डोंट नो. very fast, but Yeah. yeah. It was Story is very fast. fast. Yeah. Do you think that's the key? क्योंकि masses भी real addict हैं अब. Yeah. So Yeah. basically you're marketing a film, a horizontal frame to someone who enjoys vertical scrolling. Is that what horizontal filmmaking has become? It's more It like is. the attention span thing Yeah. from the vertical. Even Stranger Things हमने देखी अभी, that was very fast. Yeah. Like first episode से सीधा, there's no time waste. slow pacing वाली editing तो है ही नहीं अभी कहीं भी. Even Animal for that matter. Yeah. Right? Yeah. No, but actually Very even abrupt Animal- cuts. Very abrupt cuts. That's Yeah. true. और As a creator हमें हाँ. itch हो रहा था कि ये ऐसे कट क्यों हो गया. But then Yeah. it was great for like sitting and watching the whole thing. I wonder sometimes if like all of us, हम लोग social media professionals हैं, तो क्या हम लोग echo chamber में हैं या पूरी दुनिया social media addict बन चुकी है? पूरी दुनिया है. So it's not just us. Not Yeah. just us. And because इतना सारा content सब consume करना है ना, सबको patterns पता चल गया of storytelling. So it's very hard to surprise the audience now. मतलब आप किसी से भी पूछो कोई love story भी है, people can already see where it's going. क्योंकि इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया उन्होंने, दैट दे नो कि अच्छा ऐसे दिखाएंगे, हीरो ये करेगा, हीरोइन ये करेगी, फिर ये होगा. लाइक पहले ही मेरी मम्मी भी साइड में बैठ के पहले ही बता देती कि अच्छा अब ये होने वाला है, एंड दैट हैपेंस. सो एवरीवन नोज द पैटर्न्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड जो ब्रेक करता है लाइक एनिमल, इट वाज सो absurd and कुछ भी हो रहा है रैंडम, इट्स सो हार्ड टू प्रेडिक्ट. आई थिंक दैट वर्क्स. Psychoticness in films. या जस्ट समथिंग रैंडम क्या प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे ये होगा. Yeah. You know, the only thing from childhood for me that stayed constant in media is love for sport. Sport craze बढ़ रहा है. क्योंकि Same, वो same. अनप्रेडिक्टेबल ही है ना. Same. क्या कौन जीतेगा वो तो आप बिल्कुल Yeah. भी नहीं बता सकते. Especially अगर बचपन में स्पोर्ट्स देखे ना, तो वो स्पोर्ट्स देखने का प्रोसेस बहुत थेरेप्यूटिक होता है. I don't understand why, but it's just therapeutic. I loved it in that way also कि मैं पापा के साथ बैठ के कुछ देख रही हूँ और पापा कुछ समझा रहे हैं. So even like those kinds of memories with Yeah. sports is like for me family sitting together and enjoying. I Whereas think movies overall now भी- बहुत adult Yeah. scenes होते हैं, so I don't watch with my अच्छा, अच्छा. parents. अच्छा, So वाह. that's the only experience वाह left. संस्कारी, वाह. अरे यार awkward होता है अच्छा, यार. आजकल every OTT show has like too many of those scenes, so Sometimes I wonder how Saurav Joshi has kept the vlog relevance going. Like कुछ तो समझता है. Like he understands something on a deeper level. Like I can't exactly explain what. I remember even when Saurav Joshi had grown initially, it had come out of nowhere.
I don't know if you'll remember that. Yeah. But then to sustain it, I don't think कि जितना लोगों से easy समझते उतना easy है नहीं. Because I've vlogged for one phase and it was very tiring. And he does that every single day. Yeah. नहीं, sacrifices a lot though. मतलब हम What लोग do you chill think? भी कर रहे होते हैं and like after every event हम लोग बैठ के सब बात करते हैं creators, right? But he goes to his room कि मुझे edit करना है. Wow. 10 PM he has to go back to his room and सुबह 6-7 बजे उठना है मुझे. Yeah. Vlog करना. That So way that also discipline. he's too disciplined. Yeah, that कि discipline सुबह is 4 crazy. AM 6 AM he will wake up Yeah. and he will start vlogging his own things also. He won't even wait for us कि ठीक है. You know, I remember some actor, I think it was Rajkumar Rao on the show, उन्होंने कहा कि हर एक्टर ना वेट करता है खुद के पर्पल पैच के लिए, लाइक खुद के प्राइम के लिए, इक्वल टू प्राइम इन स्पोर्ट्स. आई थिंक मे बी कॉन्टेंट इज काइंड ऑफ द सेम. वुड यू कंपेयर कॉन्टेंट टू स्पोर्ट्स करियर? I feel like there are some people who wait for their prime and then some people who know how to create it. It's Whenever they Saurav want. falls in that category where he's so intelligent that he knows how he can create his Create prime it, and yeah. bring it back repeatedly. Which other creators are like this? I think anyone who's sustained for long enough. Bhuvan, Carrie, Yeah. Ashish, all of them. What do you think they want to do now going? Bhuvan हर किसी को पता है. I think he'll reach that Shahrukh Khan, Akshay Kumar level also. As far as I know, Ashish को filmmaking करनी है. As far as I know, and acting within that filmmaking. What about सबको Carrie? मोस्टली इंडस्ट्री में जाना है. कैरी का आई डोंट नो, मतलब वी हैवंट मेट हिम वेरी ऑफन और लाइक spoken to him जितना too मुझे पता है, I much. think he wants to be, even if he goes into Bollywood, writing space में ज़्यादा जाएगा than being Even an as a actor. director, he will Yeah, be a director, great yeah. director and a Yeah, writer. I don't, knowing him, I don't think he'll want to go into Bollywood. हाँ, हो सकता है. I I think think. थोड़ा वो no Yeah. bullshit type लगता है मुझे. He हाँ. would want कि मेरे हिसाब से सब बढ़िया बने. Maybe like a show, a very like Muffat show or something. Uh, I also feel कि like since I've known him, which is from very long ago, 2017-ish, उनका एक बहुत ही creative genius वाला muscle रहा है. And he's always come up with something new. Yeah. That's what I say. Every year one very, very new, fresh thing. हाँ. Who else? What's up in other people's lives? I've kind of lost touch. Are you guys in touch with people? ऐसे तो मसाला बहुत है. मतलब even about your life we get reels. ये हो गया, वो हो गया, इसने ये इसको ना- unfollow कर दिया. So then it's like out there आजकल too much. I feel a lot of that masala is, some of it is true, some of it is false. It's like burji of like, Yeah. Even the timelines are wrong. The names and people are wrong sometimes, and it's like all. I have literally opened Reddit and seen really like untrue rumors. Someone has sent me a link saying, oh, check this. And I'm like, all these things are not true. Are you also shocked कि ये आया कहाँ से? I mean, you kind of feel कि यार लोग ऐसे चीजें create क्यों कर रहे हैं? You have that question and then you realize, okay, I guess it's just an outcome of fame. Yeah. And ये मैं content creator के perspective से कह रहा हूँ, I'm sure Bollywood feels the same, cricket feels the same. Yeah. And जब भी seniors से बात करता हूँ ना, from films, from cricket, वो सब कहते हैं कि it's a part of fame. You have to learn to like just swim through it. And lies about you will be spread. और अभी फिलहाल like we were speaking about कि next क्या है, I think वो personality और वो life वाला content ज़्यादा चल रहा है. Like यही like vlogs, like Saurav's Yeah. wedding is being discussed and scrutinized to each degree at the moment, right? तो वो type की चीजें जो चल रही है, यही I think right now we are in that phase for sure. people, वही voyeurism. Yeah. People want Big Boss from the real world. And scripted का वैसे भी hype जा रहा है because as I said pattern recognition हो गया है पूरा. So people know exactly कौन क्या try कर रहा है. But when it's unscripted, like Saurav's personal life, तो फिर वो that becomes very interesting. Scripted का hype जा रहा है. Hype जा रहा है. People like raw things now. Yeah. Like what? Like मतलब सेम जोक्स जो हम भी वीडियो में करते हैं ना, दैट अभी जैसे मैं बैठ के बात कर रही हूँ इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट rather than I'm just like chilling with my friends, I'm walking around, I'm out somewhere and I crack the same joke, then it's funnier there than if I sit in my room and record it if like it's choreographed तो वो उतना funny नहीं लगता. Just I don't know, subconsciously इतना content consume करके ऐसा हो गया brain. When you think someone's trying to be funny, ये एक situation create कर रहा है ताकि ये joke मार सके, then it's not. So for a creator, then the challenge is how do I make it to people's algorithms while also being very raw? Or very raw. Yes. So this is one format. हाँ. Vlog is one format. Then even latent was very raw ना, इसलिए
That's another. थोड़ा ज्यादा ही रॉ चला गया You just create a situation and whatever moments happen, that is your short content piece. Exactly. Yeah. Exactly. For how long? फ्री फ्लोइंग At least for 1 year. नहीं 2 years तो चलेगा 2 ऐसा। साल तो 2-3 चलेगा साल ही चलेगा। बिकॉज अभी ना AI स्क्रिप्ट अगर कोई बोल रहा होता है ना तो पता चलता है सो देर आर क्रिएटर्स जैसे ट्रैवल का हो गया या फूड का कंटेंट जो लोग बनाते हैं ना व्हेन दे आर डिस्क्राइबिंग द रेस्टोरेंट द फूड द वाइब उनके बातों में मुझे आई कैन हियर ChatGPT थ्रू देयर वर्ड्स कि ये पक्का किसी और ने लिखा है even captions by celebrities creators they forget to remove the quotation marks from GPT. You know, sometimes I feel ki we talk about these things all the time, but this is our content creator muscle speaking because we are trained to see this. I don't know if the rest of the social media world, I'm not talking about professional content creators, I'm talking about brands or corporates who use social media, kitty party aunties. Do they understand all this and is there value in all this for them? Probably think there is. Yeah. There is. अगर script easily बन के मिल रही है then why not use it?